Hello, 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 hello. हाँ जी, हेलो. आप चेक की आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? ओके है, स्टार्ट करूं? हेलो, हेलो, हेलो. गुड आफ्टरनून टू ऑल. गुड इवनिंग टू ऑल एवरीवन. लास्ट क्लास को हम लोग रिपीट कर रहे हैं. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ फ्रेश बैच, राइट, फॉर अरुणाचल प्रदेश एग्जाम्स लाइक एफएओ, एडीओ, एचडीओ, राइट, पॉलिटी. The class of polity we are going to start. हेलो. अच्छा, पिक्चर आ रही है? हाँ, आवाज हो जाएगा, ठीक, देख लीजिए एक मिनट, आवाज ओके है. हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल. हम लोग कल के क्लास को, जो कि हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास था, हम उसी क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने कल पढ़ा था. हेलो, वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेम टॉपिक. दिस इज द इंट्रोडक्टरी क्लास फॉर पॉलिटी एंड everybody please keep attention to that, right? See, today we are going to start a fresh batch, right? For this exam, I told you that exams, and we are going to start with the polity. Polity, is, as you know, that it is a major component of any exam, and the most of the questions are coming from the polity, histories, and other sections. So, our topics, as per our topic, that is related to the Indian Constitution. What is written? That is written Indian Constitution, right? Indian Constitution, right? Indian Constitution, we are going to start a fresh class from today. See, as I told you, Constitution, what is Constitution? Constitution is a basic law of a country, right? है? Similarly, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन भी एक बेसिक लॉ है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए जो है आपका काफ़ी लंबी एक्सरसाइज करनी पड़ी. फर्स्ट, हमें तो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा. वी हैव टू फाइट वेरी स्ट्रांगली फॉर नेशनल इंडिपेंडेंस, फॉर द इंडिपेंडेंस, राइट. During that independence, we have demanded the different type of the facilities from the Britishers. See, out of this, one prominent is that is the Constitution, right? Constitution is one of the most important feature that we require to be studied here. Now, the point is that during the freedom struggle, we have seen that our freedom fighter was demanding for the making of the constitution from the Nehru report, then what we see Government of India Act and different others document. Even JL Nehru has also said that 1938 that we need an independent constitution.
The constitution making process is a lengthy. I am going to start from the cabinet mission plan. That plan has given the formula for making of the constitution. See, first, how Constitution of India was framed. How Constitution of India was framed, right? How the Constitution of India was framed. The first point is that, see, the cabinet mission plan came to India 1946, right? Cabinet mission plan came to India 1946. Okay? Cabinet mission plan has suggested the Constituent Assembly, rightly, Constituent Assembly, CA. Total member are 389 member. How many member there? 389 member in Constituent Assembly. Constituent Assembly was partially elected and partially nominated body. Partially nominated bodies. Okay? Partially elected and partially nominated body. Constituent Assembly was partially elected and partially nominated body, right? Total member was 389. Today class, this is the introductory class. First class, we are going to discuss about how the Indian Constitution was framed, right? During this course of discussion, we will discuss the making process, and then we also study international constitution, how they influence Indian Constitution. So, Constituent Assembly was a body, was an institution that has framed Indian Constitution. Constituent Assembly is a partially elected and partially nominated body, right? Total member was 389, out of which 296 belong to British occupied province. British occupied province, right? And 93 from princely estate. 93 from princely estate. Okay? 93 from princely estate. (93) member from princely estate. So, please note down this fact. Now, this 296 member, right, was elected on the basis of proportional representation by mean of single transferable vote system, right? This 296 member was elected by proportional PR representation by mean of STV, single transferable vote system. Proportional representation by mean of single transferable vote system. This member has to be elected. See, the seat was allotted on the basis of religion, right? It's mean that there was a list, general list, list for Muslims, list for Sikhs, etc. Right? 93 princely state did not join initially. See, Constituent Assembly
Constituent Assembly, shortly CA, took total 2 year, 11 month and 18 days. How many time it took? 2 year, 11 month, 18 days. Totally you can say almost 3 years. So Constituent Assembly take this time to frame constitution. The B.N. Rao was the legal advisor. B.N. Rao was legal advisor. B.N. Rao was the legal advisor, right, of Constituent Assembly. In the month of July and August, 1946, election was held. In this election, Congress party got huge numbers. Election किसके लिए हुआ? 296 के लिए हुआ. So 208 member got Congress, 73 Muslims, Muslim League, ML, and rest independent parties. Okay. Now, the first meeting was held 9th December 1946. The Constituent Assembly first meeting was held 9th December 1946. In that day, Dr. Sachidanand Sinha was elected as a temporary president. Due to health reason, Sachidanand Sinha has resigned, and 11th of December 1946, Dr. Rajendra Prasad was elected. Dr. Rajendra Prasad was elected as a permanent president of Constituent Assembly, right? Okay. So Constituent Assembly in that time playing a very vital role. This is the whole and sole institution that has played role of making of constitution. Please you see that. Okay. Now, CA, Constituent Assembly, has a double role. One role is to frame constitution, right? To frame constitution, one point, and second point, to make law for इंडिया. लॉ बनाने की जिम्मेदारी भी थी, राइट? क्योंकि इंडिया 1947 में आजाद हुआ, बिकम इंडिपेंडेंट. सो लॉ कौन बना रहा था? लॉ बना रहा था आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट? और भारत 47 to 50 किस डॉक्यूमेंट से रूल हो रहा था? इट वाज 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से रूल हो रहा था, फ्रॉम 47 to 50. And Constituent Assembly CA was in two roles, to frame constitution and to make law. Fine. I already told you it was a very huge task. You can say 3 year approximately time taken, and different constitution of world was taken as a source of reference. As you know that Indian constitution is the largest written constitution in the world. So far 130 constitutional amendment bill is still pending in parliament, right? And
more than 465 articles, 25 parts, 12 schedule, etc. is there. Now, coming to the making process, see, there was a different committees in the Constituent Assembly, right? And the task was given to the Constituent Assembly. See, our Constitution adopted on 26th of November 1949 and come into force 26 January 1950. ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 26 ऑफ नवंबर, राइट है, एंड 26 जनवरी 1950 इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन come into the force 1950. This is come into force, come into force. See, and November 1940 adopted. When constitution first adopted, I mean to say that partially implemented, then citizenship, parliament and election. ये यूपीएससी ने भी पूछा है, ये 3 क्वेश्चन पहले, 3 सब्जेक्ट पहले लगा है, सिटीजनशिप, पार्लियामेंट, इलेक्शन on 26 November and then constitution come into force 26 January 1950. Why this date was picked up? हमें इसके लिए फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा. जब नेशनल मूवमेंट की लड़ाई हो रही थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस हैज पास्ड अ रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज 1929 in Lahore. JL Nehru and other has passed complete independent Purna Swaraj resolution, and they have decided on 26th of January 1930 India will celebrate first Independence Day, and they have celebrated it. So to make this day very historic, very significant, that is why the 26th January was picked to the constitutional enforcement, right है? तो इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया. वी बिकम रिपब्लिक, एंड रिपब्लिक के 2 मायने होते हैं. एक, द हेड ऑफ द स्टेट, जो प्रेसिडेंट है हमारा, इलेक्टेड होना चाहिए और अपनी कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए. ठीक है, फाइन. अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और क्या क्या चीजें हो रही थी. देयर वाज अ डिफरेंट कमिटीज दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल, एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन फेमस हैज टेकन द सोर्सेस, आई मीन भारत को बनाने के लिए दुनिया भर के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ सोर्स ऑफ रेफरेंस लिया गया और उनकी कुछ अच्छी बातों को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में एड ऑन की गई, राइट है. और ये सारा काम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के माध्यम से हुआ, राइट. जैसा कि हम जानते हैं कि उस कमिटी सिस्टम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ड्राफ्टिंग कमिटी था, और ड्राफ्टिंग कमिटी का चेयरमैन कौन था? BR अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर. एंड BR अम्बेडकर was considered as the father of Indian Constitution. Now coming to the process, one point noted here that भारत में शायद ही कोई एमिनेंट पर्सन होगा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर नहीं था. ऑलमोस्ट सारे लोग थे, लेकिन गांधी जी वॉज नॉट अ मेंबर. अगेन वन पॉइंट टू बी नोटेड, आउट ऑफ 389 मेंबर, ये तो इंक्लूडिंग पाकिस्तान है. जब पाकिस्तान अलग हो गया तो 299 नंबर्स रहा. जब कॉन्स्टिट्यूशन पे डॉक्यूमेंट पे साइन हुई तो उस समय 284 मेंबर ने आपका डॉक्यूमेंट पर साइन किया. सो 389 मेंबर, जो कि आपका कैबिनेट मिशन ने सजेस्ट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नंबर्स रिड्यूस हुए बिकॉज पाकिस्तान 1947 में अलग हो गया. तो अब नंबर बचा 299 एंड 284 ने उन्होंने इस पे साइन किया, राइट. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है आपका फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेकिंग ऑफ लॉ 1947 से 50 तक कर रहे थे, राइट. नाउ
Next segment, that is a important committees. See, there are important committees under the Constituent Assembly. Important committees, 9 to 10 important committees, major committee, and approximately 20 minor committees. So we discuss only the major committees. Generally in examination, chairman of committee asked in MCQ type of exam. See, state committee, power committee, constitution committee, state committee, power committee, and constitution committee. This committee was chaired by J.L. Nehru. Jawaharlal Nehru was the chairman of this committee. Now, Rules and Procedure Committee, Rules and Procedure Committee, and Steering Committee both are chaired by Dr. Rajendra Prasad. Right? Provincial autonomy, provincial autonomy, right? Provincial autonomy, then fundamental right and minority subcommittee, fundamental right and minority subcommittee. It was chaired by Sardar Vallabhbhai Patel. Vallabhbhai Patel, right? Generally, chairman asked. Now, very famous committee that is the drafting committee. You know, drafting committee was very famous. B.R. Ambedkar was chairman. Drafting committee, B.R. Ambedkar was chairman. Total 7 member, including chairman, right? In drafting committee, total 7 member was there, including chairman, and the eminent person of drafting committee was K.M. Munshi, Mr. Aladi Krishna Swamy Iyer, Mr. N. Gopala Swamy Iyengar, Mr. Muhammad Sadaullah Khan, D.P. Khetan, right? Mr. Mittal, etc. So आप देखेंगे कि ड्राफ्टिंग कमिटी में टोटल 7 मेंबर हैं थे और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट फ्रेम किया. ये कमिटी की भी कुछ असाइनमेंट थी टू नेगोशिएट विद द प्रिंसली स्टेट, टू डिस्कस अबाउट द शेयरिंग ऑफ पावर, एंड फाइनली ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका इन कमिटीज और थ्रू द जनरल डिस्कशन ये कमिटी, एंड there are the different type of sessions, there are the different type of meetings was held. 64 लाख रुपीज जो है एक्सपेंड हुआ था उस समय. कॉन्स्टिट्यूशन में रीडिंग जो है नवंबर मंथ 1948 से स्टार्ट हुआ और अप्रॉक्सीमेटली 14th ऑफ नवंबर 1949 को ये 3 रीडिंग जो है हो चुकी थी. सी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जेएल नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लाए थे. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑन 13th of December 1946.
this objective resolution was the basis for our preamble, our philosophy of the constitution, right है. Objective resolution December 1947. The prime objective was that इसमें जो declaration था कि इंडिया एक secular country है, socialist country है, there are the justice, liberty, equality, etc. And this objective resolution was passed in January 1947, and later on it become the basis of our preamble that is called as a philosophy of Indian Constitution, right hai. Preamble is considered to be philosophy. See, in the month of January 24, 1950, national anthem और national song इनको अप्रूव किया गया. National anthem Janagana Mana, Bankim Chand Chatterjee has wrote Vande Matram, that is a national song. Bankim Chand Chatterjee has wrote national song Vande Matram in Anand Math. Which book? Anand Math. Bankim Chand Chatterjee, Vande Matram. It was also approved by Constituent Assembly in 1950 January. And see, the Janagana Mana, Rabindranath Tagore was also accepted, right? National flag 22 July 1947 को नेशनल फ्लैग को भी इन्होंने अप्रूव किया. So Constituent Assembly has discussed thoroughly, and they have done the numbers of meetings, number of, you can say, sitting, and in this meeting and final sittings, it took the total 2 year, 11 months and 18 days, and finally our constitution was drafted, and this draft constitution was given, and all of the Indian people are bounded by this constitution, right? So this is the Constituent Assembly, and you can say Constituent Assembly was mainly for the making of constitution, but due to the transfer of power, they play the role of law making body, and this law is considered as a pre-constitutional law from 1947 to 50s तक जो लॉ बनाए गए इसे हम कहते हैं आपका प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, राइट है. सो परमानेंट प्रेसिडेंट was Dr. Rajendra Prasad. H.C. Mukherjee and V.T. Krishnamachari was the deputy chairman of the Constituent Assembly. H.C. Mukherjee and V.T. Krishnamachari was, both two gentlemen was a vice president or vice chairman of the Constituent Assembly, right? So now coming to the different sources. See, our constitution maker has taken as a reference from country like USA, UK, France, Germany, right? And the important point, जो अच्छी अच्छी बातें उनको लगी, उन्होंने उन बातों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका इनकॉर्पोरेट किया, और उसके बाद हम देखते हैं कि हमने उन्हीं बातों को, I mean the point that they gave, that this constitution we have taken from that, and that is why Indian constitution is considered to be a borrowed constitution. Why Indian constitution is considered to be borrowed constitution? Because we have taken the different
subject matter from the different country, right? For example, parliamentary system we have taken UK, fundamental right we have taken from USA, emergency provision we have taken from the Germany, directive principle we have taken from the Ireland. So these provision we have taken from the different country, and that is why Indian constitution is considered to be a borrowed constitution. And one point you also note that Indian constitution is a living document. Why it is considered to be a living document, right? Because since independent till date, there are the many features, number of features, subject matter was added according to the need and prospectus of the time. That is why it is considered to be a living document. See, the important features, the sources of constitution, sources of Indian constitution. Sources, what are the sources? राइट, मेजर सोर्सेस क्या सब हैं, हमने किस देश से क्या लिया, हमारी क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल जो है आपका फीचर्स है. फर्स्ट पॉइंट, फ्रॉम यूके कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम, राइट. हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया. इट्स मीन bicameralism, idea of bicameralism, लोकसभा, राज्यसभा. जैसे हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड है, इसी तरह हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम में बाइकैमरलिज्म जो सब्जेक्ट है, यानी कि टू चेंबर्स, दैट इज अ लोकसभा एंड राज्यसभा, वी हैव टेकन एज कंपेयर टू हाउस ऑफ लॉर्ड एंड हाउस ऑफ कॉमन. देन नॉमिनल प्रेसिडेंट, nominal president, the president of India is a nominal head. President of India is a nominal head. जो real head है वो prime minister है. See, the real head, जो real power belong to the prime minister. In India, president is like a queen of England, that is, they don't have a real power, they are just nominal powers. Again, the idea of civil services, idea of rule of law, idea of single citizenship, right? Parliamentary privilege, privilege of MP and legislature, that is also taken from here, right? Idea of cabinet, this is also taken from the UK constitution, right? So UK constitution is one of the oldest unwritten constitution. It is called as the mother of all constitution. Indian constitution also influenced by the UK, and we have taken these provisions. See, next we are coming to the US constitution. USA constitution, fundamental right. US constitution is the oldest written constitution in the world and smallest one. There is only 7 articles. You know, the first 7 amendment is considered to be the Bill of Rights, that is a fundamental right. So we also, Indian constitution also taken fundamental right. यहाँ भी हमें fundamental right का जो concept है हम USA के constitution से देखते हैं. And then the idea of vice president, US constitution. See, then the next point is that the impeachment of the president, impeachment of the president, impeachment of the president, right?
Okay, then the due process of the law, due process of the law, concept of preamble, article 14 second clause, equal protection of law, equal protection of law, removal of judges of Supreme Court, removal of judges of Supreme Court SC. This provision we have taken from the USA Constitution. Now, coming to the Ireland Constitution, Ireland Constitution, Ireland Constitution, directive principle of state policy, directive principles of state policy. Shortly it is called as a DPSP, right? Then election method of the president, right, of India. Then third one, nomination of Rajya Sabha member RS, right? Nomination of Rajya Sabha member. So this is the certain features that we have taken from USA, and from Ireland we have taken these principles. Directive principle for a state policy, then election method of president, nomination. So Ireland Constitution and US Constitution, these two things. Now coming to the Constitution of Canada, right? In Canada Constitution we have taken the idea of federalism, division of power, division of power. You know, division of power are in favor of center. Union list, state list, and concurrent list. Concurrent list. So this is the three division of power. And in India, what we see in India, there is a dominance of the center. Union list is more power, a strong power as compared to the state list, right? So ये चीजें भी हम यहाँ पे देखते हैं फेडरलिज्म. Okay. Now coming to another point of Canada, the appointment of the governor. Appointment of governor, right? गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है ये भी हमने कनाडा से लिया है. One point you need here, Australian Constitution, Australian Constitution से हमने क्या लिया है? हमने यहां से लिया है concurrent list. Concurrent list, right? Okay, concurrent list we have taken from the Australia. Now coming to the another important feature, that is the provision of emergency. See, emergency provision हमने कहां से लिया है? हमने इसको जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन emergency provision, there is a three type of emergency: national emergency, article 352, state emergency 356, and financial emergency 360, right? From the Germany Constitution we have taken this provision in case of any aggression by the foreign countries.
national emergency can be imposed. In case of failure of constitutional machineries, the governor rule can be imposed. In case of crisis of finance, Article 360, the financial emergency we have taken. So, all this provision we have taken from the Constitution of Germany. Constitution of Germany. So, this is another important character of your sources. You can say the idea of the Indian Constitution. Now, coming to the Constitution of the France. France, idea of republic. Okay, liberty, equality, and fraternity. Fraternity. Republic, liberty, equality, and fraternity. This idea taken from the French Revolution, French Constitution. Okay. Now, coming to the Russian Constitution. Russian Constitution. Okay, one point you note down here what I'm telling you, but okay, after Russian I will go to that. Russian Constitution, fundamental duties. See, fundamental duties. This is taken from the USSR. Earlier it was considered to the USSR. Now it is a Russia. So, Russian Constitution, fundamental duties, an idea of socio-economical justice. Idea of socio-economic justice. This point we have taken from the Russian Constitution. Right? जहां पे हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्करेंट लिस्ट लिखा था वहां पे एक पॉइंट और आप डाल दें बच्चे, द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, ज्वाइंट सिटिंग 108 आर्टिकल में होता है जो प्रेसिडेंट कॉल करता है एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइडिंग इट. सो ज्वाइंट सिटिंग इज ऑल्सो conveyed by the president. So this idea was taken from the Australian Constitution. Joint sitting of the Indian Parliament, right? So this is idea taken from the Australian Constitution. Fine. So these are the provisions. Right? Now coming to the Japan procedure established by law. This provision was taken from the Japanese Constitution, right? जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का जो कंसेप्ट है इसको हमने लिया है, राइट? नाउ इफ आई से द सिंगल डॉक्यूमेंट that influenced our constitution, that is 1935, the Government of India Act, right? The Government of India Act 1935 is considered to be the one of the biggest document that influenced our constitution, and and it is called as a कार्बन कॉपी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इसको क्या बोला जाता है? कार्बन कॉपी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो फीचर्स हैं इन सभी फीचर्स को इंक्लूड किया गया था, लाइक फेडरलिज्म, इमरजेंसी एंड ऑल पॉइंट, राइट? सो व्हाट आई वुड लाइक टू से हियर दैट भारत का कॉन्स्टिट्यूशन एक लंबे एक्सरसाइज के बाद, एक लंबी प्रोसेस के बाद बनाया गया, और
दुनिया के डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अच्छी अच्छी बातों को इनकॉर्पोरेट करा और उसी को लेके हमारी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करी गई। कॉन्स्टिट्यूशन को मेकिंग करने के लिए जो आपका इंस्टीट्यूशन सेट किया गया था, हमने पहले ही देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, जो कि ब्रिटिशर ने आपका ब्रिटिशर ने अपॉइंट किया था कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। भारत 1947 में आज़ाद हुआ और दो डोमिनियन जो है आपके यहाँ पे बने, एक इंडिया और पाकिस्तान, राइट है। सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन was framed by Constituent Assembly, and Indian Constitution is considered to be a borrowed constitution. Why? Because we have taken the different provisions from the different countries. So this is the major character of the Indian Constitution, right? So today class में हमने क्या सब पढ़ा कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेस क्या हैं और कैसे प्रिपेयर किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, राइट है। अगर हम देखें तो भारत की कॉन्स्टिट्यूशन एक यंग कॉन्स्टिट्यूशन है, 75 ईयर के आसपास आपका होता है। और हम ये देखते हैं कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है और उसमें जो अमेंडमेंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, राइट। सो दिस वाज द आवर फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकंड, that is the I would like to say the salient feature we will discuss today, right? Salient feature today we'll discuss the first point, that is the Indian Constitution. Indian Constitution is a largest written constitution in the world, right? Originally 8 schedule, 22 parts, 395 articles. Now 465 articles, 25 parts and 12th schedule, right है। So भारत का कॉन्स्टिट्यूशन एक लार्जेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप देखोगे कि यूएसए में कितने आर्टिकल्स हैं, यूएसए में ओनली 7 आर्टिकल्स हैं। चाइना में कितना आर्टिकल्स है, 138 है, राइट है। ऑस्ट्रेलिया 127, कनाडा 148। इस तरह से अगर भारत को देखो तो एक लार्जेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। देखो बच्चे, इसमें आपको 2-3 चीजें पूछी जाएंगी, जैसे पार्ट्स पूछा जा सकता है, शेड्यूल एक हॉट फेवरेट है कि किस शेड्यूल में क्या कंटेन है, राइट है। एंड आर्टिकल तो ओवर द क्लासेस इट विल बी डिस्कस, राइट। सो टुडे आई वुड लाइक टू से कि शेड्यूल को कर लेते हैं हम लोग। और मैंने अभी आपको कहा कि 8 शेड्यूल ओरिजिनल है और 12 शेड्यूल में 4 शेड्यूल जो है आपका बाद में आया है। जैसे जो 9th शेड्यूल है वो आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में आया था। इट इज रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म। मैं 4 शेड्यूल अभी लिखता हूं, पहले जो हमने एड ऑन किया था। 9th शेड्यूल रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म 1951। 10th शेड्यूल कब आया था, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सीए इंडिकेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 10th शेड्यूल 1985 में क्या है ये, एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून। तो 2 शेड्यूल मैंने बताया जो बाद में ऐड हुआ है, इसको नोट डाउन करो। फिर आपका आता है 11th शेड्यूल, दिस इज वेरी वाइटल। 11th शेड्यूल बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। किससे रिलेटेड है, पंचायती राज सिस्टम से। किससे रिलेटेड है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज, पीआरआ इंस्टीट्यूशन। ये कब आया, 1992 में आया और इसमें 11th शेड्यूल ऐड की गई। इसमें 29 सब्जेक्ट है,
ये भी याद रखना 29 सब्जेक्ट एग्जाम में पूछा गया है कि 11 शेड्यूल में कितने सब्जेक्ट मैटर होते हैं, यू विल से कि 29 सब्जेक्ट होता है, राइट है। नाउ 12th शेड्यूल रिमेंबर दैट इज म्युनिसिपैलिटी। क्या है? म्युनिसिपैलिटी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन अर्बन एरिया। ओके, यहां कितने सब्जेक्ट हैं? 18 सब्जेक्ट मैटर है। ये सब्जेक्ट मैटर क्या है? ये सब्जेक्ट मैटर है कि आप क्या करोगे। 18 सब्जेक्ट मैंने कहा, उसमें 18 जैसे आपका वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे प्रोग्राम्स वगैरह। सो ये 4 शेड्यूल आई एम टेलिंग यू दैट वाज एडेड आफ्टर इंडिपेंडेंट। फर्स्ट वन लैंड रिफॉर्म रिलेटेड 9 शेड्यूल 1951। ओके फाइन। Second was anti-defection law 10 schedule 1985. Then 73rd constitutional amendment local self government 11th schedule. Then 12th schedule 18 subject matter related to that. So this was added. So आपको शेड्यूल को सारे शेड्यूल लर्न करने चाहिए। अभी मैं आपको और 8 शेड्यूल के बारे में डिस्कस करता हूं, राइट है। फर्स्ट शेड्यूल यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। भारत में कितने स्टेट है, कितने यूटी है? 28 स्टेट है, 8 यूटी है, राइट है। अगर मान लीजिए कोई नया स्टेट बनाने जाना है तो फर्स्ट शेड्यूल में जाएंगे, नए यूटी बनाना है फर्स्ट शेड्यूल में जाएंगे, तो फर्स्ट शेड्यूल में यूनियन टेरिटरी है। सेकंड में क्या है बच्चे? आपका सैलरीज है, ऑल्दो सैलरी वर्ड मेंशन नहीं है, अलाउंस एंड इमोल्यूमेंट। सैलरी, अलाउंस, इमोल्यूमेंट्स, राइट है। किसका? प्रेसिडेंट का, राइट है। आपको इसके लिए कुछ अच्छी स्टैंडर्ड बुक भी पढ़नी चाहिए। इमोल्यूमेंट सैलरीज वगैरह है, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राइट है, गवर्नर एटसेट्रा। थर्ड शेड्यूल में क्या है? ओथ एंड एफर्मेशन। ओथ एंड एफर्मेशन, ओथ लेना किन के लिए है? अगेन प्रेसिडेंट, एमपी, एमएलए, राइट है, जजेज एटसेट्रा, ओथ एंड अफर्मेशन। फोर्थ शेड्यूल क्या है? फोर्थ शेड्यूल है द सीट अलॉटमेंट इन द राज्यसभा। काउंसिल ऑफ स्टेट में किस राज्य का कितना सीट है? अरुणाचल का कितना है, गुजरात का कितना है, बिहार का कितना है? राज्यसभा सीट अलॉटमेंट, आरएस, सीट अलॉटमेंट। इसको अच्छे से पढ़ना, ये एग्जाम में आता है इससे क्वेश्चंस। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल। सी फिफ्थ शेड्यूल क्या है? फिफ्थ शेड्यूल है आपका ट्राइबल डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑटोनॉमी, प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल इंटरेस्ट। किसमें? आपका फिफ्थ शेड्यूल में। सिक्स में भी प्रोटेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल्स, शेड्यूल ट्राइबल एरियाज हैं। इसमें आपके 4 स्टेट हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सी दिस इज द 4 स्टेट रिलेटेड टू 6 शेड्यूल एरियाज। फिफ्थ में रेस्ट ऑफ द इंडिया है, प्रोटेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल्स पीपल, ट्राइबल पीपल, राइट है। जैसे झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, अप्रोक्सीमेटली 10/11 स्टेट से रिलेटेड। सेवेंथ और एट। सेवेंथ में क्या है? डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, डिवीजन ऑफ पावर, दिस इज मेंशन इन द शेड्यूल नंबर 7। 8 में क्या है? लैंग्वेज,
प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, टोटल 22 लैंग्वेज है। अभी तक इसमें 3 टाइम अमेंडमेंट हो चुका है, 21st, 71st, 92। लास्ट अमेंडमेंट जो हुआ था 2002 में 92 अमेंडमेंट, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली 4 लैंग्वेज को ऐड किया गया था, राइट है, by 92 amendment year 2002. So far 3 time amendment was done. So 8 schedule related to language, 7 schedule related to division of power, union list, state list, concurrent list, and earlier we have discussed that first schedule में क्या था, फर्स्ट शेड्यूल में आपका आता है यूनियन, सेकंड में आता है सैलरी, इमोल्यूमेंट्स, पैसा, मनी, थर्ड में क्या आ रहा है आपका ओथ एंड अफर्मेशन, फोर्थ में आ रहा राज्यसभा के लिए सीट अलॉटमेंट है, काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए, फिफ्थ में डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है, रेस्ट ऑफ द इंडिया, एंड सिक्स में आपका आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट, सेवेंथ में आपका डिवीजन ऑफ पावर है, एट में आपका लैंग्वेज है। सो आज हमने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस शेड्यूल। यू हैव टू लर्न दिस बिकॉज इन प्री एग्जाम्स इट इज अ मैंडेटरी क्वेश्चन, मे बी मैचिंग द लिस्ट, या डायरेक्ट पूछ लिया फर्स्ट शेड्यूल में क्या हुआ, फिफ्थ शेड्यूल में क्या हुआ, क्या सब्जेक्ट मैटर है, सो यू हैव टू लर्न अबाउट इट। Okay, if you have any question you can ask me, if you have any question you can ask me, right? Again I repeat, कल की क्लास को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, राइट? ये फ्रेश क्लास है प्री के लिए, आपका एग्जाम्स के लिए, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स के लिए, अरुणाचल प्रदेश के जो बच्चे हैं उनके लिए क्लास है, और इंडियन पॉलिटी हम इसमें, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओवरऑल बेसिक टू एडवांस, उन सबको हम लोग कंप्लीट करेंगे, राइट? All the question you will cover from that, you will get all the question from this, right? So for today class I think this is sufficient now for today. Thank you very much. आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चे, फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग अराउंड 5 o'clock 5:15 करेंगे टुमारो, राइट? थैंक यू।